Hi friends, I am shivkumar Yerawar from Brilliant Commerce Academy in Nanded. We are here to revise your secretarial practice 12th subject. We are revising today second chapter, source of business finance. कुछ चीज़ें तुमको जो ध्यान रखनी है, तुम्हारा टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने रहने दो सो दैट यू कैन रिवाइज इट प्रॉपर्ली. एंड ये जो भी वीडियोस है हेडफोन्स यूज करो तो तुमको पूरा सुनने में लगेगा एंड यू विल फील दैट कि आई एम टीचिंग टू योरसेल्फ, तो पर्सनल टीचिंग जैसा फीलिंग आएगा. Okay, so we are going to cover only important points in this chapter. The important points are features of shares, then types of share, equity share, preference share, features of equity shares, features of preference shares, distinguish between equity and preference shares, types of preference shares, and features of debenture, features and bond types of bonds, and ADR and GDR. Okay, so one by one we will start. Your first is feature of shares. Share is the smallest part of capital. It shows the ownership. It is intangible. Share is a movable property. It is expressed in terms of money. It is expressed in terms of face value, issue value, market value. Share is entitled to get a profit in the form of dividend. There are two parts of share: equity shares and preference shares, and each share has distinct number. Next is your types of shares. First is equity share. What are the features of equity shares? The memory technique is नरेंद्र मोदी को NFC and FB पे पोस्ट करना नहीं आता. R, your R stands for right, R risk, R residual claimant, N stands for no preferential right, M market value, N no charge on asset, F face value, C control, F fixed return, no fluctuating dividend, B bonus and right issue, P permanent capital. Next is types of shares. कौन से types है? Equity share with normal voting right, equity share with differential voting right. Next is your features of preference shares. Features of preference shares: MRF के preference के face value पर natural voting हुई. Over here M stands for market value, R risk, F fixed return, preferential dividend, face value, P priority repayment of capital, R is your rights and bonus issue, natural nature of capital, voting right. Next is types of preference shares. Types of preference share: veg, non-veg. Your वेज नॉन वेज मतलब एक टाइप बोल दो, उसमें नॉन लगा दो, ठीक है. कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल होता है, सॉरी, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, एंड लास्ट इज रिडीमेबल. इरिडीमेबल इज आउट ऑफ सिलेबस. ओके. नेक्स्ट इज योर डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. डेफिनेशन बुक की लिखना हमेशा. Meaning, equity shares have no priority right while receiving the dividend and repayment of capital at the time of winding up of company. Preference shares carry preferential right in respect of dividend and repayment of capital in winding up of company. Next is equity share को voting right है, preference को नहीं है. But if it affects their interest, then they get a voting right. Next is your equity share का जो face value 1 and 10 rupees के बीच में कैरी होता है. प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स. नेक्स्ट, इक्विटी शेयर को बोनस एंड राइट इशू मिलता है, प्रेफरेंस को बोनस एंड राइट इशू नहीं मिलता. इक्विटी शेयर रिस्की कैपिटल माना जाता है, प्रेफरेंस शेयर इज सेफ कैपिटल. टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर 2, प्रेफरेंस शेयर 7. नेक्स्ट, कैपिटल जब कैपिटल एप्रिसिएशन इक्विटी में होता है, प्रेफरेंस में कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है. एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, इक्विटी शेयर जो रिस्की इन्वेस्टर है वो करता है, और जो कॉशियस इन्वेस्टर है वो प्रेफरेंस शेयर में करता है. रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी का नॉर्मली रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस का फिक्स्ड होता है. नेक्स्ट इज योर डिबेंचर. इन केस ऑफ डिबेंचर, फीचर्स ऑफ डिबेंचर. फीचर्स ऑफ डिबेंचर आर फ्लिपकार्ट PTS. ओवर हियर फ्लिपकार्ट PTS में F stands for face value, L stands for listing, I stands for interest, P stands for
part is to debenture. A stands for assurance of repayment. R stands for right of debenture holder. T stands for time of payment. P stands for parties promise. T stands for your time of payment, and S stands for security. Next is your types of debentures. What are the types of debentures? Memory technique is शाहरुख वर्सेस RCB. यहाँ पे क्या है, जो भी मैं नाम लूंगा उसका अपोजिट तुमको दूसरा टाइप मिल जाएगा. S secured, अपोजिट अनसेक्योर्ड. R registered, अपोजिट bearer. RCB का R, it is your redeemable, opposite irredeemable. C convertible, opposite non convertible. नेक्स्ट इज यूर बी, ये जो बी पहले वाला bearer को लिंक करता है. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स. डिबेंचर शेयर्स में जैसा बोला मीनिंग हमेशा बुक का लिखना चाहिए. मीनिंग शेयर्स, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी. डिबेंचर इज द इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेट. बाद में क्या डिस्टिंग्विशेस है? शेयर्स के केस में शेयर को वोटिंग राइट है, डिबेंचर को वोटिंग राइट नहीं है. शेयर्स को तुमको क्या बोलते हैं, शेयर्स पार्टिसिपेट कर सकता है, डिबेंचर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. शेयर्स को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर को इंटरेस्ट मिलता है. डिबेंचर को सिक्योरिटी है, शेयर्स को सिक्योरिटी नहीं है. शेयर के टाइप से दो है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. तुम्हारे डिबेंचर के टाइप शाहरुख वर्सेस RCB. जब लिक्विडेशन आता है शेयर्स को एंड में मिलता है. डिबेंचर होल्डर्स गेट द पेमेंट अर्लियर कंपेयर टू शेयर्स. आफ्टर दैट रिस्क अगर कवर करते हैं, इक्विटी इज मोर रिस्की, डिबेंचर इज नॉट दैट मच रिस्की. टाइम ऑफ इशू, डिबेंचर एट द स्टार्टिंग ऑफ डिबेंचर बाद में इशू होता है, इक्विटी इनिशियल स्टेजेस में होता है. किस पर्पस के लिए होना? शेयर्स लॉन्ग टर्म, डिबेंचर्स मिडिल टर्म. ओके, after that is next point is your features and types of bonds. Features and types of bonds. Features of bonds, what are the features? Nature of finance, status of investor, return on bonds, repayment. Next is types of bonds. What is the memory technique of types of bonds? सार कॉल पे बोले डिबेंचर D0 पे जाके फ्लोट कर रहा है. S stands for single redemption. A stands for amortizing bond. R stands for fixed rate bond. Call bond with call option. P bond with put option. Inflation index bonds. Deep discount bond. Zero coupon bond. Floating rate bond. These are the types of bonds. Next and the last important point in this chapter is ADR and GDR. Now ADR and GDR, ADR and GDR, ADR stand for American Depository Receipt and GDR stand for Global Depository Receipt. कब इशू होता है? When a domestic company wants to list themselves for international market, problem क्या होता है? They cannot list. Why? Due to rules and regulations, they cannot list themselves into international market. So उसको जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा. What is the जुगाड़? So they deposit their shares to depository. And who is the depository? Normally a bank. Then bank issues them the depository receipt, and each depository receipt represent 5 to 10 shares. Next, now rather than listing the shares, list the depository receipt, as the rules and regulations are for shares, not for depository. So they will list their depository. Now the lock-in period of 45 days is there. Next point तुमको जो लिखना है, dividend is declared in home currency and they will get the dividend after their conversion into their own currency. ये सब होने के बाद तुमको 5 एक्सचेंजेस के नाम दे देने, उसके अंदर जैसे कि तुम्हारे बुक में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, सिंगापुर एंड हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज. ओके, दैट्स इट अबाउट ऑल दिस चैप्टर. इतना रिवाइज करने के बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर होना है. रिमेंबर
पूरा चैप्टर पढ़ा वाला कभी भी अच्छा है. दिस इज फॉर जस्ट फॉर रिवीजन. रिपीट दिस वीडियो 2 to 3 times so that you can mug up और तुमको रिवीजन में हेल्प होगा. Just look at the time. Within 10 minutes you are able to cover the whole chapter. Okay. All the best. Thank you.